हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नेम है क्लॉड। तो पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं व्हाट इज़ क्लॉड। इट इज़ अ फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स developed by Anthropic. It is designed to generate, summarize, and reason over natural language. While emphasizing honesty, helpfulness, and safety. अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्लॉड होता क्या है। व्हाट इज़ क्लॉड? It is a generative AI model similar to ChatGPT. Gemini and others, which are LLMs. It can firstly answer questions, write code, debug programs, summarize documents, analyze PDFs, generate content, translate languages, solve mathematical problems, assist in software development. How Claude works. हमारे पास सबसे पहले होता है फ्रेंड्स यूज़र प्रॉम्प्ट। उसके बाद आता है हमारा टोकनाइजेशन, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर,
उसके बाद आता है फ्रेंड्स अटेंशन मैकेनिज्म। इसके बाद आता है नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन। देन वी हैव रिस्पॉन्स generated। अब देखते हैं फ्रेंड्स की फीचर्स ऑफ क्लॉड। सबसे पहले हम देखेंगे फीचर, उसके बाद देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन। फीचर्स में पहला जो फीचर है वो है लार्ज कंटेंट कॉन्टेक्स्ट विंडो। सेकंड है स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी। थर्ड है रीजनिंग। फोर्थ है सेफ्टी। फिफ्थ है मल्टी मॉडल। लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो में क्या डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स? इट कैन एनालाइज वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी में क्या होगा फ्रेंड्स? इट कैन जनरेट एंड एक्सप्लेन कोड। रीजनिंग में है फ्रेंड्स फिर क्या? सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स लॉजिकल टास्क्स। सेफ्टी में है फ्रेंड्स built using constitutional AI। फिर आता है फ्रेंड्स मल्टी मॉडल। इट कैन अंडरस्टैंड इमेजेस। तो ये था फ्रेंड्स की फीचर्स ऑफ क्लॉड। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। One of Claude's biggest innovation is constitutional AI। Instead of relying only on human feedback, Claude follows a predefined set of principles to generate safer and helpful response।
Example principles. First of all, it is be honest. Second one is avoid harmful advice. Third is respect privacy. Then we have explain reasoning responses या responsibly. नेक्स्ट है फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ क्लॉड. पहला है चैटबॉट, दूसरा है कोडिंग असिस्टेंट, तीसरा है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, चौथा है कस्टमर सपोर्ट. इसके बाद है फ्रेंड्स रिसर्च. देन वी हैव एजुकेशन. उसके बाद है फ्रेंड्स कंटेंट जनरेशन. अब फ्रेंड्स देखेंगे हम पाइथन एग्जाम्पल. हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लेंगे. तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक फंक्शन डेफ फैक्टोरियल n कोलन इफ़ n डबल इक्वल टू 1 या 0 रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. बाहर आके फ्रेंड्स इसमें हम करेंगे प्रिंट फैक्टोरियल 5. तो इससे हमारा फैक्टोरियल 5 प्रिंट हो जाएगा एंड द आउटपुट विल बी 120. Claude explains each line, optimizes code and suggests improvements. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको ग्रुप पे पूछ लीजिएगा. विल रिस्पॉन्ड टू इट. थैंक्स.